oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एस जयशंकर ने रूसी तेल खरीदने का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि भारत से ज्यादा तेल यूरोपियन देश खरीदते हैं। इस वीडियो में वह अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ वॉशिंगटन जर्नलिस्ट के सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस बीच एक पत्रकार उनसे भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर सवाल पूछता है, जिसका जवाब देते हुए एस जयशंकर ने कहा कि आप भारत के लिए तेल खरीदने से चिंतित हैं, लेकिन यूरोप जितना तेल एक दोपहर में खरीदता है उतना भारत एक महीने में भी नहीं खरीदता। देखिए इस वीडियो में कि पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर एस जयशंकर ने किस तरह से जवाब दिया। I think I probably answer for both of us. First of all, thank you for the advice and suggestions in your question. I prefer to do it my way and articulate it my way. Now, as Secretary Blinken has pointed out, we have made a number of statements which outline our position in the UN, in our parliament and in other forums. And briefly, what those positions state is that we are against the conflict, we are for dialogue and diplomacy, we are for urgent cessation of violence, and we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. एस जयशंकर के इस जवाब पर महाराष्ट्र शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इसकी सराहना की है। फिलहाल अमेरिका द्वारा बनाए जा रहे दबाव का भारत पर कुछ खासा असर नहीं दिखाई दे रहा है।